ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट व्यूअर्स। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट समर इंटर्नशिप प्रोग्राम based on another opportunity from a private organization. The name of the organization is Next Gen Scientist Foundation, which is registered under the Trust Act of India 1882. इस फाउंडेशन के अंदर ये आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है एंड स्टाइपेंड भी देती है. सो दिस स्टाइपेंड इज 3000 फॉर 3 months इंटर्नशिप. अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज़ का पर मंथ का इंटर्नशिप बैठता है आपका. सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हु ऑल आर एलिजिबल एंड हु वेयर यू कैन अप्लाई. बेसिकली दिस इज एन इंटर्नशिप फॉर कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी पीपल. वेट लैब के लिए दिस इज नॉट रिकमेंडेड. सो लेट्स गो इनटू दिस. So what it is saying is it offers an opportunity to fund internship for undergraduates and postgraduate students who wish to gain research experience in life sciences. Interns will conduct independent research under the mentorship of a principal investigator of their interest at selected Indian universities. यानी कि आपको एक PI सिलेक्ट करना है जो किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज में काम करता है, एंड देन आफ्टर सिलेक्शन यू विल गेट हिज अप्रूवल दैट ही इज रेडी टू गाइड योर समर इंटर्नशिप. देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस NGSF प्रोग्राम. अब इस NGSF प्रोग्राम में आपको एक उसका लेटर हेड पे सिग्नेचर की आपके PI का कि ही इज रिकमेंडिंग यू, ऐसा करके आपको एक सबमिट करना पड़ेगा. सो एप्लीकेशन अभी इसकी ओपन है. यहाँ से इस लिंक को, ये वाला जो लिंक है फॉर NGSF, ये वाला लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ओपन दिस एप्लीकेशन फॉर्म लिंक. अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं. ऑल द सेकेंड ईयर you have to be a student of second year for a 3-year undergraduate program, or second year or third year for a 4-year undergraduate program, or first year of a second year master's program, or second, third, fourth year of a 5-year integrated program of an Indian institute. ठीक है, ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई. बी एक्सेप्टेड टू वर्क इन द लैब ऑफ अ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इन एनी इंडियन इंस्टीट्यूट आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी. यानी कि आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उसके अलावा किसी और इंस्टीट्यूट में आपको इंटर्नशिप करने के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए किसी PI से. और बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग अ लाइफ साइंस एसोसिएटेड इंटर्नशिप फॉर अ पीरियड ऑफ 2 or 3 months. यानी कि 2 से 3 महीने की आपको आपके पास टाइम होना चाहिए इंटर्नशिप करने के लिए. ठीक है, अगर आपके पास कोई और एडिशनल फंडिंग है जैसे KVPI, INSA, JNCSR, IIT, ऐसे से कोई भी आपके पास फंडिंग है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द NGSF प्रोग्राम. जैसे स्ट्रिक्टली फॉरबिड, इट डज नॉट कंप्लाई for providing internship where the intern has to pay to gain the experience. So this is the motto of this organization, and finding a PI is mandatory. So जहाँ जिन लोगों को पता नहीं है PI ढूंढना कैसे ढूंढना है, कौन कौन से recommended institutes हैं, they have provided a list of recommended institutes. You can इस पे recommended institutes की लिस्ट में आपके जितने CSIR, DST, DBT जितने भी institutes हैं, these come under this category. ये जितने पूरी लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है. और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. PI के पास मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फ्रेशर नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ द एप्लीकेशन. और इसमें जो अमाउंट है आपका, इन्होंने लिखा है कि NGS interns will receive a stipend of 1000 per month for an on-site internship and 3000 for remote internship for a period of up to 3 months upon satisfying requirement. अगर आपको कहीं बार ट्रैवल भी करना है for on-site interns, travel will also be reimbursed up to the cost of 3rd AC class train ticket round trip. ठीक है, एप्लीकेशन आपको खुली है आपकी. नाउ दे आर ओपन. द एप्लीकेशन सिस्टम ओपन ऑन December 1st, 2023 एंड क्लोजेज ऑन 12 midnight on 31st March 2024. मतलब 3 महीने का अप्रॉक्सीमेट, 4 महीने का पास अप्रॉक्सीमेटली आपको पीरियड है. 2 महीने इस एप्लीकेशन, 3 महीने के आसपास इस एप्लीकेशन खुले हुए हो गए हैं. एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड ऑन अ रोलिंग बेसिस. अर्ली एप्लीकेशंस आर एनकरेज्ड. सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल बी इनवाइटेड टू इंटरव्यू वाया स्काइप इन अप्रैल में आपका इंटरव्यू होगा. रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड इन बिफोर April 31st. सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड वाया ईमेल. ऑलराइट, इंटर्नशिप पीरियड आपका मई से जुलाई 2024 होगा. साइंटिफिक कम्युनिकेशंस में आपका जो भी काम होगा वो दैट यू नीड टू कम्युनिकेट टू देम. एंड देन डिसर्टेशन प्रोग्राम का क्या है इसमें कि अगर वंस यू हैव कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप एंड योर फर्दर NGSF फर्दर support those interns to do their bachelor's or master's thesis in the same lab. In that period also they will provide you a stipend of 6000 per month for up to 6 months. Okay, for any other further inquiry you can email at this email ID intern@ngsf.in, or you can chat with our team directly on this link. These links will be provided in the description of the video. Okay, thank you.